तो आज आम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फास्ट टेस्ट डिस्कशन करिया ठीक है। तो फास्ट क्वेश्चन है आमर एजुकेशन कमिटी उपर गोटे क्वेश्चन आसला ठीक अच्छे। सैडलर कमिशन, हंटर कमिशन, रिले कमिशन, हाटो कमिशन। तो मत कह को कमिशन केबे हेइथिला आ तार ये कौन थिला क्राइटेरिया सब कौन थिला कि कहि परियो एटा केबे हेइथिला? नाइंटीन 17 ठीक अच्छे। तापर हेइथिला हंटर कमिशन केबे 1882 ठीक अच्छे। आ गोटे हेइथिला रिले कमिशन एटा केबे हेइथिला 1902 ठीक अच्छे। आ गोटे हाटो कमिटी केबे हेइथिला 1929 ठीक अच्छे। आमको कौन पचार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो फास्ट कोड आसो 1882 ऑप्शन 2 है गोटे ऑप्शन रे हमर आंसरटा आसी जाउची आंसर बी। देखो ये आंसर अच्छी तो आंसर डी तो सॉरी सॉरी आउट आउट अच्छी 2 है आमर हंटर कमिशन। तापर कौट आस 1902 रिले कमिशन ठीक अच्छे 3 तो ये ऑप्शन डी आस जाउची। तो मत कह एजुकेशन उपरे आमर केबे स्टार्ट होता ब्रिटिश जब आसिले फास्ट केबे आमर फाउंडेशन पड़ीला एजुकेशन सिस्टम उपरे को एक्ट है कि को कमिटी है कोटे कहि परिबो? गोटे 1813 गोटे होता चार्टर एक्ट रे ब्रिटिश गवर्नमेंट 1 लाख रुपीज देइथिले एजुकेशन प्रमोशन पाई ठीक अच्छे। सेटा फास्ट फाउंडेशन पड़ता। तापर सेकेंड आसला कौनटा मैक्युले मिनिट 1835। थर्ड होता वुड्स डिस्पैच 1854 ये देख एटा वुड्स डिस्पैच 1854। तुम मन रख पड़ो गवर्नर जनरल से किए थे लॉर्ड डेलहाउसी। हंटर कमिशन है 1882 लॉर्ड रिपन थे। ये रिले कमिशन आसीगला 1902 लॉर्ड कर्जन थे। सैडलर कमिशन आम पढ़ले 1917 लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो तुम यही सब पढ़ला बेले ना मन रख कि टाइम आउ सब कौन इवेंट होता ठीक अच्छे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड आसीगला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म होता से टाइम है तापर आउ रहा भी इम्पोर्टाट यहाँ तुम कहीपर सेकेंड कमिशन इम्पोर्टाट हट कमिशन इम्पोर्टाट सैडलर कमिशन रिले कमिशन हंटर कमिशन चार्ल्स वुड्स डिस्पैच है। अच्छा मुझे रिकमेंडेशन कहूँ कमिटी है मैक्युले मिनिट रे हमर होता वेस्टर्न साइंस एंड लिटरेचर इन इंग्लिश है। मैक्युले मिनिट रे हमर सेटा होता इंग्लिश लिटरेचर को से प्रमोट करते। डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी से कहते डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी कौन है कहला किछि लोकों को से माने इंग्लिश एजुकेशन देबे से माने ताकर ऑफिस बियरर हेबे ब्यूरोक्रेट हेबे तापर सेटा डाउनवर्ड फिल्टर करिवो पॉपुलेशन मानू ठीक अच्छे। सेटा डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी मैक्युले मिनिट है 1835 है। एजुकेशन टू स्मॉल एंड एलिट अपर क्लास इंडियन इन साइंस एंड इंग्लिश मैक्युले मिनिट होता। तापर आमर सैडलर कमिशन रे कौन होता गोटे कलकाटा यूनिवर्सिटी होता स्टडी एंड रिपोर्ट ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ कलकाटा यूनिवर्सिटी तार रिपोर्ट से देते सैडलर कमिशन ठीक अच्छे। तादरे से देते फीमेल एजुकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी टीचर ट्रेनिंग को इंपोर्टेंस देवाई से कहते सैडलर कमिशन रे। आउ हंटर कमिशन 1882 रे होता तो सेटा प्राइमरी एजुकेशन वर्नाकुलर लैंग्वेज से देवाई कहते हंटर कमिशन है। तापर सेरेगेंट प्लान गोटे थिला जोटा एटा 1929 लॉर्ड यूनियन का टाइम रही 1944 कोटा ठीक अच्छे। आउ कौन रहा एजुकेशन रिलेटेड आउ किछि हितला स्टार्ट के 1813 तापर होता मैक्युले मिनिट 1835 तापर होता वुड्स डिस्पैच तापर होता हंटर कमिशन 1882 तापर 1902 रिले कमिशन तापर सैडलर कमिशन 1917 तुम क्रोनोलॉजी सब मन रखी मन था कहीं
एजुकेशन तुम गोटे नोटा बनाऊच ना लिखिदेव एजुकेशन कमिशन लिखिदेव 8-10टा कमिशन आसीगला तार इंपोर्टान्स जहाँ भी कमिटी रेकमेंडेशन था से लिखिदेव नोट डाउन करदेव 1854 सेकेंड क्वेश्चन कौन थी देखिए है ये देख ये तुम दीटार जदि भी तुम जापर ना तो तुम एलिमिनेट कर तुम सब ट्राए कर जो क्वेश्चन तुमको न आसी तुम कि एलिमिनेट कर ट्राए कर गोटे क्वेश्चन भी तुम एलिमिनेट कर दीटा क्वेश्चन भी एलिमिनेट कर सेकेंड क्वेश्चन कौन थिला विलियम जेम्स हेनरिक कोलब्रुक एंड नाथानिएल हालहेड हैड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन एमंग देम तांको भितर कौन कॉमन थिला कौन कॉमन थिला आंसर ऑफ दे वेर लिंग्विस्ट हु ट्राइड टू इंटरप्रेट द कल्चर ऑफ साउथ एशिया टू ईस्ट इंडियन कंपनी से माने कहार मेंबर थिले हमर गोटे थिला एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल ठीक अच्छे 1784 रहीला किए करथिले सेटा सर विलियम जोन ठीक अच्छे तार से माने मेंबर थिले आसीगला दे आर मेंबर्स ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल व्हिच वाज फाउंडेड इन 1784 by Sir William Jones. The Asiatic Society was dedicated to study of Asian language, culture and religion. एटा जस्ट रिमेंबर कि तांकर ना गरा कौन थिला का से रिलेटेड थिला तांको बेसी जानिया दरकार नहीं ठीक अछि एटा गोटे को with reference to modern Indian history consider the following journals and newspaper मूक नायक बहिष्कृत भारत जनता which of the following are established by B.R. Ambedkar कौन आंसर हम तीन टा करथिले ठीक अच्छे मूक नायक भी करथिले बहिष्कृत भारत कले जनता करथिले मते या छड़ा मते कहो कि तांकर तीनटा पॉलिटिकल पार्टी थिला ता ना कहि परिबो तीनटा हला गोटे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी थिला ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थिला आउ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया तुम जिते पढ़ो ना तीनटा धर तांको जोर्नाल तीनटा पढ़ल तो आउ कौन तांको रिलेटेड रहिला ताकू तुम लिखिद साइड बाय साइड आउ बहुत सारा जिन है फास्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया थिले आमर फाउंडिंग मेंबर ऑफ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थिले ड्राफ्टिंग कमिटीर भी चेयरमैन थिले एरा सब तुमको मन रखा पड़ो ठीक अच्छे मूक नायक होता 1920 रे है 1920 एटा होता 1927 बहिष्कृत भारत जनता के होता 1930 ठीक अच्छे तीनटा पार्टी ना कौन कहली इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी आ गोटे ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ठीक अच्छे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाकी विषय तो जानछ फास्ट लॉ मिनिस्टर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन ये जानछ ठीक अच्छे यहाँ कौन हम ताले ऑल ऑफ द अबव आंसर सी ये 1930 रे से स्टार्ट करते जनता द पीपुल ऑप्शन 2 वाला बहिष्कृत भारत स्टार्ट करते 1927 रे आ मूक नायक स्टार्ट करते केबे 1920 डेट एते एटा दरकार नहीं बट कौन कौन रिलेट जर्नल्स की न्यूज़ पेपर एटा तो मन रखियो गला 3 नंबर एटा वार्धा एजुकेशन स्कीम with reference to Indian national movement consider the following statement regarding the Wardha education scheme ठीक है फर्स्ट ऑप्शन है इट वाज ए नेशनल एजुकेशन स्कीम बेस्ड ऑन द आइडिया प्रपोज्ड बाय महात्मा गांधी एटा ठीक है ना बोलो ठीक है करेक्ट द फ्रेमवर्क ऑफ द स्कीम वाज डेवलप्ड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नेहरू रिपोर्ट ठीक है ना बोलो नेहरू रिपोर्ट केबे आसला 1909 ठीक अच्छे एटा भूल अच्छी द स्कीम एम्फासाइज लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन
एटा ठीक है बोलो को एटा ठीक है बोलो को गांधी स्कीम माने आइडिया थिला तो एटा ठीक अच्छी है इट एम टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल बॉयज एंड गर्ल्स बिटवीन द एज ऑफ 17 to 14 कौन वो एटा ठीक अच्छे तो आंसर कहला 134 सी लिखिदेवा सी 4 नंबर सी अच्छी ठीक अच्छे यहाँ आमर ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज कन्वेन्ड एट वार्धा 1937 ठीक अच्छे फ्रेम नेशनल स्कीम ऑफ एजुकेशन इट वाज आउटकम ऑफ सीरीज ऑफ आर्टिकल पब्लिश बाय महात्मा गांधी आउ सेकेंड है द डिटेल फ्रेमवर्क आमर होता जाकिर हुसैन कमिटी रेकमेंड करते यार फ्रेमवर्कटा थर्ड स्टेटमेंट है द स्कीम प्रोवाइडेड द मेन प्रिंसिपल बेसिक एजुकेशन थ्रू लर्निंग एक्टिविटीज नई तालीम गोटे कॉन्सेप्ट गांधी देते होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन कौन हेड हार्ट एंड हैंड थ्रू क्राफ्ट बेस्ड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हेड हार्ट एंड हैंड नई तालीम कॉन्सेप्ट देते है The scheme was centered on manual productive work, craft centered education, integrating education with productive activity. है जोटा तुम कहीपर वोकेशनल एजुकेशन फोर्टा थी वादा स्कीम एम्ड एट प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल बॉयज एंड गर्ल्स बिटवीन द एजेस ऑफ 17 to 14 है यहाँ मन रखियो इट प्रपोज्ड एन एजुकेशन सिस्टम दैट अलाइन विथ इंडियन कल्चर एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ मास एजुकेशन प्रैक्टिकली एटा को कमिटी द फ्रेमवर्क ऑफ द स्कीम डेवलप बाय को कमिटी जाकिर हुसैन कमिटी है 1937 सब हिस्ट्री मन रख क्रोनोलोजी डेट इवेंट तुम साइड बाय साइड सब मन रख कौ टाइम कौन होता से टाइम आउ कौन इवेंट होता यहाँ को विथ रेफरेंस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट कन्सिडर फॉलोइंग पेयर्स ये देख फेमस न्यूज पेपर पचार न्यूज पेपर जर्नाल है वंदे मातरम एटा किए फाउंड करते बंकिम चंद्र पाल है स्वदेश मित्र जीएस आयर आउ कौन करते कहल आउ कौन तांकर न्यूज पेपर थिला डेली जो न्यूज पेपर पढ़ुच द हिंदू जीएस आयर है आ गोटे हिंदू पैट्रियट गिरीश चंद्र घोष ठीक अच्छे है यहाँ ठीक अच्छी शूद्र किए करते गोपाल गणेश अगरकर स्वदेश मित्रटा एक दुई दुईटा ठीक अच्छे है जीएस आयर मन रखिए द हिंदूटा इंपोर्टेंट देखी दियो वंदे मातरम जर्नल स्टार्टेड बाय बिपिन चंद्र पाल है अरविंद घोष टूक ओवर द एडिटरशिप वंदे मातरम लैटर दरकार नहीं नेक्स्ट है स्वदेश मिश्र है आमर कौन जी सुब्रमण्यम आयर आमर द हिंदू भी सी करते द हिंदू पैट्रियट गोटे आसला हरीश चंद्र मुखर्जी गिरीश चंद्र घोष दी जन रिलेटेड थिला फास्ट थे एडिटरशिप थी गिरीश चंद्र घोष तापर हरीश चंद्र घोष एते ये भी मन रखा दरकार नहीं बहुत फैक्चुअल हो शूद्रकटा इंपोर्टेंट है जी जी अगरकर आंसर कौन हम
ओनली 2 बी। With reference to the economic consequences of British rule in India, following statement. Statement 1 होची during the phase of British mercantilism 1757 to 1813 Indian textile industry and weavers witnessed significant economic prosperity. Statement 2 है the period of mercantilism witnessed a substantial export of Indian goods, especially textile, to England. तीनटा फेज थिला इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन तीनटा फेज की कहि परियो मैडम कहतु तीनटा फेज थिला सेटा मेन्स रो क्वेश्चन आसे गोटे है मर्कांटिलिज्म जोड़ा 1857 रु 1757 रु 1813 आउ सेकेंड है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म 1813 रु 1858 आ गोटे थर्ड है फिनान्स कैपिटल आफ्टर 1858 है तीनटा टाइम रे कौन होता फास्ट मर्कांटिलिज्म टाइम रे से मैंने कौन कले इंडियन गुड्स को से जो रेवेन्यू कलेक्ट करुले ब्रिटिश मैंने रेवेन्यू कलेक्ट करते से पैसा इंडियन गुड्स किणुले ताको एक्सपोर्ट करुले कुआड़े ब्रिटेन को सेटा मर्कांटिलिज्म इंडस्ट्रियल कैपिटल 1813 रु 1858 जाए कौन है इंडिया सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केट फॉर ब्रिटिश फिनिश गुड होगा है सेटा इंडस्ट्रियल कैपिटल से टाइम होगा थर्ड है फिनान्स जोड़ा यूज कले से टाइम रे कौन कले ब्रिटिश माने आमर इन्वेस्ट कले रेलवे है फिनान्स है से सब इन्वेस्ट कर रिटर्न ले तो तीनटा फेज रे इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन इंडिया रही कौन तीनटा फेज फास्ट है मर्कांटिलिज्म 1757 रु 1813 ठीक अच्छे सेकेंड हूँ आमर इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म 1813 रु 1858 थर्ड हूँ आफ्टर 1858 फिनान्स कैपिटलिज्म ठीक अच्छे तो यहाँ आंसर कौन हम कह तीन टा कहली During the phase of British mercantilism, Indian textile industry and weavers witnessed significant economic prosperity. भूल हम witness significant economic prosperity कर नथले ठीक अच्छे यहाँ भूल अच्छे The period of mercantilism witnessed substantial export of Indian goods, especially textile, to England. ठीक अच्छे है तो यहाँ कौन हम Statement 1 is not correct, Statement 2 is correct. आंसर डी बाकी डिटेल्स अच्छी तुम ए मॉडल आंसर है तुम देखो मुझे एनालिसिस कर दूँ विथ रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 कौन रहा कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस रिजाइन फ्रॉम देयर ऑफिस इन 1939 1939 कौन इवेंट होता जो आमर इंडियन कांग्रेस मिनिस्टर मैंने रिजाइन करते कौन में रिजाइन करते वर्ल्ड वार 2 ठीक अच्छे रिजाइन करते 1939 कौन में रिजाइन करते कौन में रिजाइन करते ब्रिटिशर माने वर्ल्ड वार 2 रे इंडिया इनवॉल्वमेंटा को डिक्लेयर करते इंडिया एज ए पार्टी विदाउट इंडियन कनसेंट माने इंडियन मान को कनसेंट न नहीं कि इंडिया को गोटे पार्टी हिसाब से डिक्लेयर कर देते सेटा गोटे रहा फास्ट ठीक अच्छे स्टेटमेंट 2 वाइसरॉय लिलिथ को डिक्लेयर इंडिया पार्टिसिपेशन वर्ल्ड वार 2 विदाउट कंसल्टिंग इंडियन पीपुल है दुटा स्टेटमेंट दे दीजिए तो आंसर कौन हम आंसर कौन हम ए है ये गोटे मन रख इंडिया डिसाइड करला सपोर्ट इंडिया डिसाइडेड टू सपोर्ट इन द दीटा कंडीशन इंडिया सपोर्ट करी डिसाइड करला कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द वार इंडिया गोटे दीटा कंडीशन रखला फर्स्ट है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब वार पर इंडिया सपोर्ट कर सेकेंड है इमिडिएटली सम फॉर्म ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट शुड बी एस्टाब्लिश एट द सेंटर
रेस्पॉन्सिबल सम फॉर्म ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेंटर रे फॉर्म करियो दबो और इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करियो दबो दीटा कंडीशन बट द ऑफर इज रिजेक्टेड रिजेक्ट हेतला तो मिनिस्टर माने रिजाइन करछे तापरे एटा गोटे भल इवेंट एटा बहुत क्वेश्चन आसे यूपीएससी रे क्वेश्चन आसे एटा with reference to history of modern India, the establishment of National Defence Council was most closely associated with which of the following? Go. এটা কার সঙ্গে associated? এটা হবো 8 না 8B August offer 1940 नेशनल डिफेंस काउंसिल ना अच्छा नेशनल डिफेंस काउंसिल कौन पे होता है इंडियन मानकर पार्टिसिपेशन वर्ल्ड वार 2 रे इंडियन मानकर पार्टिसिपेशन बढ़ाया से कराई फास्ट तो यहाँ होता 1940 रे है आंसर बी एटा फैक्ट है जस्ट मन रख तो यहाँ को रिजोल्यूशन पास इन द त्रिपुरी सेशन ऑफ द कांग्रेस तो देखो 1939 रे ये गोटे इवेंट होता कांग्रेस प्रेसिडेंट जड़े इलेक्टेड होते सुभाष चंद्र बोस सी रिजाइन करते ड्यू टू कौन गांधी सागर से जो ये डेडलॉकटा होता तो तांको पर किए प्रेसिडेंट होते किए प्रेसिडेंट होते यहाँ तुम ये कर यहाँ मन रख इवेंटा यहाँ खोज तुम यहाँ अगस्ट ऑफर होता डिफेंस काउंसिल यहाँ मन रख क्रिप्स मिशन मत कह क्रिप्स मिशन 1942 यहाँ कौन होता अगस्ट ऑफर रे से माने डोमिनेंट स्टेटस ब्रिटिश माने देइथिले कांग्रेस रिजेक्ट करथिला सेम जिनस होइथिला क्रिप्स मिशन 1942 रे होइथिला आईएनसी रिजेक्ट करथिला गांधी ता गोटे बढ़िया टर्मटे देइथिले कौन कहिथिले पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक ठीक है वाबेल प्लान एटा 1945 है यहाँ मन रख है नेशनल डिफेंस काउंसिल होता है अगस्ट ऑफ 1940 टाइम रे होता यहाँ को इंडियन मानक वर्ल्ड वार 2 रे इन्वॉल्व कराया तैयारी होता द ड्रॉट ऑफ 1865 फॉलोड बाय फेमाइन द फॉलोइंग ईयर अफेक्टेड ओडिशा मद्रास नॉर्दर्न बेंगल एंड बिहार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिशन वाज अपॉइंटेड फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फेमाइन इन द एबव मेंशन रीजन एटा को कमिशन से अपॉइंट होता फेमाइन कमिशन को कमिशन जॉर्ज कैम्पबेल The drought of 1865 followed by famine following year affected Odisha, Madras, Bengal, Bihar. The calamity was most severe in Odisha. Odisha आमर जो 9 को दुर्भिक्ष होइतला. Hence the name was Odisha famine ता ना आतला ला. एटी देखो फेमाइन कमिशन कौन को होता 1870 रु 1880 गोटे थिला 1880 रे रिचर्ड साची कमिशन गोटे होता 1897 जेम्स लैली कमिशन होता है मन रखियो है
1900 होता आंथोनी मैकडोनेल कमिटी गोटे थिला 1943-44 होता जॉन वुड हुड फेमेन कमिशन 3-4टा फेमेन कमिशन जेनु एजुकेशन कमिशन कहली फेमेन कमिशन एटा क्रोनोलॉजी तो मन रखियो कहा पर को कमिशन एटा मन रखियो एटा कौन है जज कैंपबेल कमिशन है 1865 गोटे बुंदेला रेवेलियन बुंदेलखंड रीजन कौटी अच्छी बुंदेला रीजन आमर है रेवेलियन होता बुंदेलखंड रीजन टा कौटी अच्छी नॉर्दर्न एमपी सदर्न यूपी ठीक अच्छे केबे होता यहाँ 1842 ठीक अच्छे द रेबेलियन प्रिसीडेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 ठीक अच्छे इट वाज ए डायरेक्ट रिएक्शन टू इंक्रीज टैक्सेशन ऑफ सागर नर्मदा रीजन ऑफ बुंदेलखंड ठीक अच्छे द इम्पोर्टेंट लीडर्स एसोसिएटेड विथ द रेबेलियन तांटिया टोपे एंड रानी लक्ष्मीबाई एटा कह ये ठीक है भूल अच्छी ना एटा ना एटा नहीं तादर थिले मधुकर साहा एंड जवाहर सिंह जवाहर दी जन थे एमान नुहति एमाने 1857 रिवोल्ट संगे एसोसिएटेड रानी लक्ष्मीबाई थे झांसी तांतेटेब कौटी थे कौटी थे आउ जन तांतेटेब संगे आउ जन थे बुझो आंसर 1 और 2 है ए दी जन थे मधुकर शाह और जवाहर सिंह दी जन लीडर थे ए दी जन हूँ अच्छा नाना साहेब तांटिया टोपे से कौ एरिया से रिलेटेड थे देखियो 1857 पढ़िया arrange the following battles or event of the Carnatic War chronological order Battle of Adyar Battle of Ambur Siege of Arcot Carnatic War time रे तीनटा बैटल होता कौटा केबे होता को फर्स्ट कार्नाटिक वार केबे होता देखियो सेटा बैटल ऑफ आडियर होता 1746 बैटल ऑफ अम्बर 1749 सीज ऑफ आर्कोट 1751 तो क्रोनोलॉजी रे एटा मन रखियो 1 2 3 बी आंसर बैटल ऑफ आडियाटा होता फास्ट ऑफ पार्ट ऑफ फर्स्ट कार्नाटिक वार था बिटवीन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तादर थिले नवाब ऑफ आर्कोट अनवरुद्दीन खान नवाब डिफिटेड होता सेकेंड बैटल ऑफ अम्बूर 1749 एटा क्या भितर होता पार्ट ऑफ सेकेंड कार्नाटिक वार कंबाइंड फोर्स ऑफ फ्रेंच चंदा साहिब मुजाफर जंग से मैंने गोटे पढ़ते डिफिट एंड किल अनवरुद्दीन खान चंदा साहेब तापर नवाब ऑफ आर्कोट होते सीज ऑफ आर्कोट 1751 से कौन होता बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मोहम्मद अली खान
वर्सेस चंदा साहेब एंड फ्रेंच चंदा साहेब गोटे पटे रहिले ईस्ट इंडिया कंपनी मोहम्मद अली खान गोटे पटे रहिले ब्रिटिश कैप्चर्ड आर्कोट एंड कैपिटल ऑफ नवाब कौन कहला नहीं एटा थिला आर्कोटा थिला कैपिटल ऑफ हमर नवाब ऑफ आर्कोट ए जो नवाब कर्नाटिक रो कैपिटल कर्नाटिक हाँ तार कैपिटल थिला एटा एटी देखो बैटल ऑफ आइडियर 1746 ड्यूरिंग फास्ट कर्नाटिक वार तार इवेंट फास्ट कर्नाटिक वार होता देखो 1746 रु 48 होता सेकेंड कर्नाटिक वार मन रख इवेंट 1749 रु 54 होता बैटल ऑफ अंबर था थर्ड कर्नाटिक वार होता 1757 रु 63 थर्ड कर्नाटिक वार है तार ट्रिटी कराई मन रख फास्ट कर्नाटिक वार अक्सिला चैपेल सेकेंड ट्रिटी ऑफ पौंडीचेरी थर्ड ट्रिटी ऑफ पेरिस सेकेंड एट बैटल ऑफ अंबुर 1749 जिते भी बैटल पड़ो ना ताकू रिलेट करके तार जी तुम ये थो आम ट्रिटी जहाँ भी हो से सब मन रख एटा को एंग्लो नेपाल वार consider the following statement the war was primarily triggered by the border dispute in the Terai region and Kumaon region केबे हितला एटा ठीक अच्छे है आमर है साउथ ऑफ नेपाल और नॉर्थ ऑफ यूपी से रीजन एटा द वार एंडेड विथ द ट्रिटी ऑफ यांडाबो भूल अच्छी एटा हूँ फास्ट आंग्लो बर्मीज वार है यहाँ यार ट्रिटीटा है यांडाबो फास्ट आंग्लो बर्मीज वार आ गोटे नेपाल विड्रू फ्रॉम द सिक्किम आफ्टर द वार ठीक अच्छे ट्रिटी ऑफ एटा को ट्रिटी ताले इतला को ट्रिटी इतला ट्रिटी ऑफ सगोली आंग्लो नेपालीज वार सगोली एटीन 16 है ये ट्रिटीटा नुहे यहाँ आंग्लो बर्मीज वार ट्रिटीटा कॉज कौन पे आंग्लो आंग्लो नेपालीज वार्टा कौन पे होता गोरखा had expanded aggressively encroached upon areas claimed by the local ruler under the British protection गोरखा माने आमर इंग्लिश मानकर जो ब्रिटिश मानकर प्रोटेक्शन जो रूलर थिला तांको एरिया को एनक्रोच करथिले सेथिबे आंग्लो नेपाल वार होता तो ऑप्शन कौन हम ओनली टू बी Gorkha had aggressively expanded, encroaching upon the claim by local ruler out of British protection, which became immediate trigger for the war. It a Treaty of Vandavo, which actually first Anglo-Burmese war, 1826. It a 1816. No, 1816. ठीक है. It a 1826. Under this treaty, Nepal ceded Kumaon, Garhwal, Sikkim territories and allow the placement of a British resident at Kathmandu and settlement was not correct. Treaty of Sogoli है with reference to the book Desar Katha written by Sankaram Ganesh
द अस्कर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एटा कौन होता को 13 नंबर क्वेश्चन ना इट वन अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट्स हिप्नोटिक कंक्वेस्ट ऑफ द माइंड है देशर कथा ये फैक्ट वाला तो मन रखा पड़ो ये ठीक अच्छे इट इंस्पायर द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्ले एंड फोक सॉन्ग ठीक अच्छे द यूज ऑफ देश बाय देश दुष्कर वाज इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीजन ऑफ बेंगल है ये देखो तुम एलिमिनेट कर ये जो क्वेश्चन ये देदेव स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ है ये तुम ट्राए कर जिनस को तुम मार्क कर स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेंगल ये भूल है आंसर हम 1 and 2 ट्राए कर एमती स्पेसिफिक वर्ड करा तुम सब मार्क कर Dusker warned against the hypnotic conquest of mind. He argued that British had not just conquered India through force, but he had also enslaved Indian psychic through their education, culture, making Indians believe in the superiority of the West and inability of British rule. First, ठीक अच्छी. Second, भी ठीक है. The book was immensely popular and served as a major source of inspiration for the cultural resistance. देखो ये दे द आइडिया वाज डिस्टिल्ड इनटू स्वदेशी स्ट्रीट प्ले यात्रा फोक सॉन्ग एंड पैम्पलेट टू रीच द इलिटरेट masses effectively spreading the message of economic boycott एटा भूल अच्छी है although written in Bengali the resident of Bengal the use of desh by Deskar was not restricted to the region of Bengal he used it to national context referring to entire Indian subcontinent ये आसला ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किए देते आउ जड़े भी थे सागर आरसी दत्त ये इकोनॉमिक क्रिटिक दादा भाई नाराज एंड आरसी दत्त ठीक अच्छे बुक ना कौन थी ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया ठीक अच्छे देखो यहाँ एमती एलिमिनेट कर बुझिपार तो बिफोर लॉन्चिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया महात्मा गांधी सर्व्ड ए मेमोरेंडम विथ सर्टन डिमांड्स ऑफ द पीपल टू द वाइसरॉय लॉर्ड इरविन इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग डिमांड এটা কেবে হইতলা 1930 तांकर किछड़ा डिमांड थिला कौन डिमांड थिला एक्सेप्टेंस ऑफ पूर्ण स्वराज है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ठीक अच्छे रिमूवल ऑफ लैंड रेवेन्यू एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम द लेजिस्लेटिव कंट्रोल ठीक अच्छे एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स ठीक अच्छे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अंडर द फेडरल स्ट्रक्चर एटा कौन कहते 14 नंबर एटा भूल अच्छे रिमूवाल से कही नथिले से रिडक्शन कहते है ये देखिए यहाँ ठीक अच्छे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अंडर फेडरल स्ट्रक्चर ठीक अच्छे abolition of criminal investigation department এটা भी ठीक है चलो सॉरी भूल अच्छे এটা ठीक अच्छे এইটা ভুল আছে provincial autonomy ভুল আছে 14 नंबर क्वेश्चन आंसर ए ओनली 2 है ओनली 2 है फास्ट हम पूर्ण स्वराजटा रही डिमांड थी abolition of salt tax ये दुटा ठीक अच्छे बाकी सब भूल अच्छे कौन डिमांड थी देख है 11 पॉइंट डिमांड आप कहती है द रुपी स्टर्लिंग रेशियो शुड बी रिड्यूस टू 1/4D पर रुपी से आम स्टर्लिंग को बेंचमार्क हिसाब से यूज होता ब्रिटेन जोटा होता लैंड रेवेन्यू शुड बी रिड्यूस्ड
है कंप्लीट आबोलिशन कहने रिड्यूस टू हाफ एंड मेड सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल नॉट टेकन आउट ऑफ देयर कंट्रोल सॉल्ट टैक्स शुड बी आबोलिश्ड सॉल्ट टैक्स को आबोलिश कहते लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस कहते ठीक अच्छे ना से भूल अच्छी रिमूवल नुहे रिडक्शन से कहते आउ रिमूवल कहते कंप्लीट आबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स है रिडक्शन ऑफ मिलिटरी एक्सपेंडिचर 15% टू बिगिन विथ एटा 11 पॉइंट ये डिमांडटा मन रखिए रिडक्शन ऑफ सैलरीज ऑफ द हाई ग्रेड सर्विस बाय हाफ प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल एंड कोस्टल शिपिंग पैसेज ऑफ कोस्टल ट्रैफिक रिजर्वेशन बिल एक्सेप्टेंस ऑफ पोस्टल रिजर्वेशन बिल discharge of all political prisoner except those condemned for murder allowing the popular control issue of firearm license for self defense abolition of criminal investigation department option is correct अच्छा एटा नथला कि introduction of provision with no positive response from the government Mahatma Gandhi decided to launch civil disobedience movement making salt the central issue and the symbol of the movement civil disobedience movement तो थिला ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हमर अछि इंडियन नेशनल 1929 सॉरी एटा पूर्ण स्वराज डिमांड हमर थिला 1929 रे 1929 ने सेटा फास्ट डिमांड करथलेला 1929 एक्सेप्टेंस ऑफ पूर्ण स्वराज एटा नुहे तो एटा हबो दीटा एटा हबो ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट द नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस लाहौर सेशन 1929 रे मेन ऑब्जेक्टिव थिला पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस बट द मेमोरेंडम सॉल्व बाय गांधी जी डिड नॉट इवन रिमोटली मेंशन द रिजॉल्व टू अटेंड पूर्ण स्वराज गांधी जी मेंशन कर नथले बट 1929 जोटा आमर लाहौर सेशन होता से डिमांड करते यहाँ नाला 11 पॉइंट डिमांड नाला गोटे भूल करदेली यहाँ नाला यहाँ थिला रिमूवालटा नाला रिमूवाल नाला रिडक्शन थिला आबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्सटा थिला ठीक है आबोलिशन ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट थिला दीटा हम आंसर in the context of history of modern India consider following she is considered the first Indian woman to contest election to legislative body 1926 she actively participated in the salt satyagraha post independence she played an important role in the establishment of national bodies such as all India handicrafts board and national school of drama किए थिले तांको भितरे 15 नंबर को हाँ कमला देवी चट्टोपाध्याय तो अदर मान विषय कौन जान सरोजिनी नायडू इम्पोर्टेंस कौन थी कह फास्ट इंडियन वोमेन प्रेसिडेंट केबे होते 1925 सुचेता कृपलिनी सी कौन इनवल्व थे आमर ना सी थे 1942 आमर से जो सुचेता कृपलिन जो आम सब लीडरलेस मूवमेंट होता क्विट इंडिया मूवमेंट टाइम रे से थे जो कौन से कहते भूलीगली देखी दीजिए कमला देवी चट्टोपाध्याय 1903 ରୁ 1988 जाए थे है इंडियन नेशनल मूवमेंट पॉलिटिकल एक्टिविज्म सोशल रिफॉर्म कल्चरल इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग तीन टाइम से इन्वॉल्व थे है सी बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू कॉन्टेस्ट लेजिस्लेटिव इलेक्शन 1926 व्हेन शी स्टूड फॉर द मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्टिव पार्टिसिपेंट थे सॉल्ट सत्याग्रह ठीक अच्छे अरेस्ट भी होते सी वाज आल्सो एसोसिएटेड ऑर्गेनाइज ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस she was closely associated with establishment of institutions such as
ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री एम्पोरियम, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, संगीत नाटक एकेडमी। Consider the following statement. Which of the above reform were adopted at the Nagpur session 1920? कौन कौन अडॉप्ट कराइला को नागपुर सेशन कौन पे फेमस कहल से स्टार्ट होता आमर जो स्टेट कांग्रेस कमिटी जो प्रदेश कांग्रेस कमिटी जो सब स्टेट वाइज से स्टार्ट होता ठीक अच्छे अपॉइंटमेंट ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमिटी 15 मेंबर ठीक अच्छे आबोलिशन ऑफ एंट्री फी आबोलिशन नथिला रिड्यूस कराइला 4 आना को 4 अणा जो कहती है ये भूल अच्छे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी ये आसला प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी ऑन ए लिंग्विस्टिक बेसिस ठीक अच्छे ओपनिंग of Congress membership to all men and women of the age of 21 and above 1 3 4 ठीक अच्छे 1 3 4 है यहीटा भूल अच्छे यहाँ 4 अणा को रिड्यूस कराइला बाकी 3टा ठीक अच्छे यहाँ देख होता डिसेम्बर 1920 रे इट वाज प्रिजाइडेड सब मन रख कौटी इंपोर्टाट इवेंट आईएनसी रही एंड ताकू कि प्रिजाइड करते वी राघवाचार्य है ड्यूरिंग दिस सेशन आम आईएनसी पास मेन रिजन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रिजोल्यूशन पास होता ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होता मेंबरशिप रिड्यूस होता 4 अणा को तापर आमर होता प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी आमर सेटअप होता 15 मेंबर कांग्रेस वर्किंग कमिटी एस्टाब्लिश होता एंट्री वाज रिड्यूस्ड 4 अणा ये प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी मन रखा यहाँ लिंग्विस्टिक बेसिस रे होता वार्ड लेवल कमिटी भी होता मेंबरशिप वाज ओपन टू ऑल मेन एंड वुमेन अबव द एज ऑफ 21 ठीक अच्छे मेंबरशिप ओपन होता आगुरी कहते कांग्रेस टाक इलिट ग्रुप बोली कहती ब्राह्मण आउ माने अपर क्लास बोली कहते तापर सेटा ओपन होगा समस्त Which among the following explains the meaning of the safety valve theory in the context of Indian national movement? A theory that argued that Congress was formed as a outlet to the discontented educated Indians. ठीक है A theory that argued that Congress was formed as a safe outlet to the hostile attitude of the British towards the Indian people. Our theory a theory which believed that the British and the ex-rebels of 1857 should amicably resolve their difference against each other. An idea aimed at promoting goodwill among the Indian people. এটা তো কেবে নুহে किए देइथिले सेफ्टी वॉल थियोरीटा सेतेबेले किए थिले कांग्रेस जो हमर इंडियन वाइसरॉय डफरिन एओयूम देइथिले कांसेप्ट है 1885 तो यहाँ कौन हम आंसर हाँ ये हम यहाँ तो केबे भी नुहे A theory which believed that British and ex-rebels ସେଇଟା ବି ନୁହେଁ ଏଇଟା आंसर The theory argued that Congress was formed as a safe outlet to the discontented educated Indians देखिए आंसर टा Safety will provide a control of the great and the growing forces generated by the British themselves.
एडी आसीगला 18 नंबर क्वेश्चन एटा को आईएनसी सेशन प्रेसिडेंट इंपोर्टेंट डिसीजन कोटी कौन होता 1896 बदरुद्दीन त्याबजी इंपोर्टेंट डिसीजन वंदे मातरम सॉन्ग एट द सेशन कांग्रेस बाय रविंद्रनाथ टागोर ठीक अच्छे 1906 दादा भाई नारोजी इट वाज अनाउंस दैट स्वराज वाज द गोल ऑफ इंडियन पॉलिटिकल एफर्ट 1907 रास बिहारी घोष द कांग्रेस विटनेस स्प्लिट बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट कोड़ा ठीक अच्छे को बदरुद्दीन त्याबजी केबे आइथिले 87 नहीं हाँ 1887 এটা ঠিক আছে হল দাদা ভাই নারাজ ঠিক আছে 1900 सूरज स्प्लिट होता ठीक अच्छे 96 रे किए होते रहीमुत्तला सायनी एटा देखी दियो 1885 फास्ट उमेश चंद्र बानार्जी 1886 कलकत्ता सेशन दादा भाई नारोजी 1887 मद्रास बदरुद्दीन त्याबजी 1888 अलाहाबाद जॉर्ज विले फास्ट यूरोपियन थे ठीक अच्छे फास्ट यूरोपियन गोटे आसो फास्ट फीमेल आसो गोटे फास्ट इंडियन फीमेल गोटे गांधी केबे प्रिजाइड करथिले 1923 ना 24 देखिए 24 कौटी करथिले बेलगांव 1896 गोटे कलकत्ता रे हला रहीमुत्तला सायनी जोटा आम पढ़े 1899 लखनऊ रमेश चंद्र आरसी दत्त 1901 कलकत्ता दिनेश वाच्छा ये अच्छा यहाँ ठीक अच्छे रविंद्रनाथ टागोर आमर वंदे मातरम यहाँ ठीक अच्छे बट यहाँ भूल अच्छी है यहाँ हम ये तो आंसर कौन हम ओनली 2 17th and during the 17th and 18th century in which of the following places did the Dutch establish their trading center in India कोटी कोटी डच माने एस्टाब्लिश करथिले को मछलीपट्टनम सूरत कोची भारुच नागपट्टिनम ठीक अच्छे मछलीपट्टनम टा कौटी आंध्र प्रदेश एटा गुजरात कोची केरला एटा हला भारुचटा बेले गुजरात ठीक अच्छे एटा कौटी तमिलनाडु एटा मन रखियो डच कौटी करथिले इंग्लिश कौटी करथिले फ्रेंच कौटी करथिले ऑल हवाला 1 2 3 4 5 with reference to colonial history of India, consider the following statement. Statement 1 रहा the battle of Kolachel resulted in the decline of Dutch influence in India. Statement 2 रहा the battle of Kolachel, the British East India Company defeated the Dutch forces. Which one of the following is correct? सब क्वेश्चन रे करेक्ट और इनकरेक्ट गोल बुलेब कहीं बहुत सारा क्वेश्चन करेक्ट पचार तुम इनकरेक्ट मारिक आसो इनकरेक्ट पचार करेक्ट मारिक आसो सब यही जिनसा फास्ट तुम गोल बुलेब कौन पचार कौन है जानवर अच्छी 20 नंबर ना एटा द बैटल ऑफ कोलाचल रिजल्ट इन द डिक्लाइन ऑफ डच इन्फ्लुएंस इन इंडिया एटा 1741 रे 1741 है बैटल ऑफ स्टेटमेंट 2 बैटल ऑफ कोलाचल ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट डिफीटेड द डच फोर्सेस एटा हम फोर्सेस ऑफ ट्राभांकोर
ट्राभांकोर तो यहाँ भूल अच्छी तो अब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट 2 इज नॉट करेक्ट लिख दो आंसर The Dutch presence, statement 1 correct अच्छी. Dutch presence in India ultimately limited. It declined significantly after the defeat of the Battle of Colachel in 1741. Where the forces of Travancore under the king of Marthanda Varma decisively defeated the Dutch both land and sea. ये राजा डच मान को हरई बैटल ऑफ कोलाचेल 1741 रे. एटा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नुहे है. Consider the following statement. Statement 1 होची the royal charter granted by Queen Elizabeth in 1600 did not confer upon the English East India Company the authority to raise a private army. ठीक है. स्टेटमेंट 2 देछि द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टाब्लिश एज ए ट्रेडिंग कंपनी. कोटा ठीक अछि. सेकंड ठीक अछि. फर्स्ट डिड नॉट कन्फर. हाँ कन्फर करिथिले. सॉरी एटा ये अछि भूल अछि. तो अब स्टेटमेंट 1 is correct 2 is not. 1 is not correct 2 is correct. आंसर है D. देखि दो तार आंसर टा हैला. एग्जांपल ऑफ ट्रेडिंग कंपनी. स्टेटमेंट 1 is incorrect. The royal charter granted by Queen Elizabeth 1 gave English East India Company special power. One such power was author to raise private army. Private army raise करे पे power देती है. Statement 2 is correct. East India Company was established as a trading company हो. ठीक है. The work Siarul Mukherin, who is described the Battle of Plassey, 1757. It written by whom? Ghulam Hussain. Factual मन रखियो पड़िबो एटा. Siarul Mukterin, translated as Review of Modern Times, is one of the most significant Persian historical accounts of 18th century India, written by Ghulam Hussain Tabatabai. एटा हमर बैटल ऑफ प्लासी टाइम रे लिखा हितला ना 1757. Consider the following statement. The first woman president of the Indian National Congress was এটা কম বানছে অ্যানিমেশন কেবে ইতলে কেবে ইতলে 1917. सरोजिनी नायडू केबे इतले एबे कहली 1925. फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक अच्छे
केबे आइतले 1887 1887 23 ना एटा हला को सेशन एटा हितला 1917 कालकाटा सेशन ठीक अच्छे एटा हला सरोजिनी नायडू लखनऊ कानपुर सॉरी कानपुर हाँ 1887 टा एटा गोटे केबे हितला देखिया केबे हितला मद्रास मद्रास फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट किए फर्स्ट यूरोपियन आईएन जॉर्ज ह्यूले फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आईएन इंडियन नेशनल कांग्रेस आनी बेसांत है कालकाटा सेशन 1917 सरोजिनी नायडू कानपुर सेशन 1925 आउडेला नेल सेनगुप्ता बिकेम द थर्ड वुमेन हितले सेकंड नॉन इंडियन आईएनसी सेशन 1933 इंपोर्टेंट नुहे एटा मन रखियो नाटा जदि हबो बदरुद्दीन त्याबजी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ठीक अच्छे मद्रास 1887 आंसर कौन हम 2 In the context of freedom struggle of India, which of the following statement with reference to the first session of INC Indian National Congress? First session केबे हितला 1885 की प्रिजाइड करथले उमेश चंद्र बनर्जी ठीक है It was held at Gokuldas Tezpal Sanskrit College in Bombay ठीक अच्छे एटा ठीक अच्छे लॉर्ड डफरिन वाज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम ठीक अच्छे द सेशन वाज प्रिजाइडेड बाय उमेश चंद्र बनर्जी ठीक अच्छे इन दिस सेशन द रिजोल्यूशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी वाज अडॉप्टेड व्हिच कंडेम द एनेक्सेशन ऑफ अपर बर्मा बाय द ब्रिटिश एटा कौन अछि को ठीक अच्छे एटा दिस सेशन द रिजोल्यूशन केतेटा डेलीगेट हमर से सेशन अटेंड करथिले 72 डेलीगेट्स ए ठीक है इन दिस सेशन द रिजोल्यूशन ऑन फॉरेन पॉलिसी वाज अडॉप्टेड व्हिच कंडेम्ड द एनेक्सेशन ऑफ अपर बर्मा बाय द ब्रिटिश 1 2 3 4 सी 24 देखिए आंसरटा आईएनसी इतला 1885 रे बॉम्बे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज रे इतला लॉर्ड डफरिन थे से वाइस रॉय उमेश चंद्र बनर्जी प्रिजाइड करथिले हेटा नॉट अ रिजोल्यूशन सेठी अडॉप्ट कराइतला कौन कौन थिला सेटा देखदो They demanded appointment of Royal Commission for Inquiry into Indian affairs on which Indian would be adequately represented. First गोटे तांकर ये डिमांड थिला रिजोल्यूशन रो आउट रिजोल्यूशन दे डिमांडेड abolition of Indian Council of the Secretary of State of for India. The Congress wanted the Secretary of State to be responsible directly to the British Parliament. This demand was based on the idea of the British people were just
and fair. If properly informed, they would never deviate from the right path. This was resolution demand thila la. There was a resolution on foreign policy which condemned annexation of Upper Burma. Other resolution covered subjects such as functions of central, provincial, legislative council holding simultaneous examination for the civil services in Britain and in India. ये चार्टा थिला तांकर रिजोल्यूशन डिमांड with reference to Delhi Darbar 1911 during the British rule in India. Consider the following statement. It was organized to mark the succession of King George V of Britain. ठीक है छेटा. During the Delhi Darbar 1911 the partition of Bengal was annulled. ठीक है ना बोलो छी. The shifting of capital British आमर कालकाटा दिल्ली कैपिटल शिफ्ट भी होता है एटा भी ठीक अच्छी. जनगण मन कंपोज बाय रवीन्द्रनाथ टैगोर वाज फर्स्ट सॉन्ग इन दिल्ली दरबार 1911. ठीक अच्छे एटा होता आमर कालकाटा सेक्शन 1911. सेठी आमर होता ये नथला दिल्ली दरबार टाइम रे एटा गीत बोला नथला कालकाटा सेशन 1911 रे होता. तो ऑप्शन कौन है 1 2 3. (1911) marked the succession of King George V. This Darbar was historic for two reasons. One was the attended emperor himself. Second, it was where the shifting of the imperial capital from Kolkata to Delhi was announced. Second time, correct annulment of partition of Bengal होता है सेतबेले. जनगण मन was first song at Calcutta session 1911, not Delhi Darbar. Two separate home rule league were established by Ani Besant and Bal Gangadhar Tilak with the objective of attaining self-government for India. In this context, consider the following. Tilak's home rule league operated in which of the above region? कोडी कोडी तांकर थिला. तिलक आनि बेसंत कर दि जण करथिले 1916. होम रूल लीग रो एम कोन थिला कहलो? सेल्फ गवर्नमेंट स्वराज इंस्पायर्ड बाय इरिस होम रूल लीग. इटा कर्नाटक रे थिला. ठीक अच्छे बुझे कर्नाटक आ गोटे है सीपी सेंट्रल प्रोविंसेस आ गोटे है बेरार. आनि बेसेंट कौन करले रेस्ट ऑफ इंडिया रे तांकर अराउंड 200 ब्रांचेस थिला. तिलक होम रूल लीग रो बहुत कम ब्रांचेस थिला. आनि बेसेंट 200 ब्रांचेस अराउंड 200 ब्रांचेस थिला. तो यहाँ है कर्नाटक सीपी बेरार. तो मन रखे पड़ो 135. होम रूल लीग एप्रिल 1916 होता बॉम्बे. The Home Rule League was inspired from a political party and movement of similar nomenclature in Ireland for the objective of attaining self-government, self-rule juda. Although Ani Besant had also launched Home Rule League, the two league neither merged nor did they any situation of friction arise between them as they had demarcated their respective areas of activity. Tilak operated in Maharashtra, excluding Bombay. Bombay रे किए Ani Besant करते कर्नाटक करथिले, बेरार करथिले, सेंट्रल प्रोविंसेस करथिले. आनि बेसंत वर्ड रेस्ट ऑफ इंडिया विथ साउथ एज अ प्राइमरी फोकस.
एटी animation started September 1916 operating rest of India had 200 branches. मन रहा तिलक आमर महाराष्ट्र करते एक्सेप्ट बॉम्बे बेरार कर्नाटक सेंट्रल प्रोविंसेस एनिमेशन रेस्ट ऑफ इंडिया रे करते consider the following statement. The Home Rule League movement in India witnessed a decline after 1918. Second statement Allah, in 1918, Bal Gangadhar Tilak was deported to Mandalay on the charges of sedition. Statement 3 Allah, there was a difference of opinion between moderate and extremist sections of the Home Rule League. First ठीक अच्छी এটা ঠিক ଅଛି ହେଲା 1918 ପରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏଟା ଡିକ୍ଲାଇନ୍ କରିଥିଲା ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି 1918 ରେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଡିପୋର୍ଟ ହେଇନଥିଲେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲେ 1908 ରେ ଠିକ ଅଛି 1918 ରେ ତିଲକ ଲେଫ୍ଟ ଫର ଇଂଲଣ୍ଡ 1918 ରେ तिलक इंग्लैंड पलैते टू फाइट ए लॉ सुइट है 19 जो देछि कि 1918 रे बाल गंगाधर तिलक वाज डिपोर्टेड टू मंडले एटा 1908 रे हितला देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन ऑफ द होम रूल लीग ठीक अछि तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 एटा only one of the statement 2 and 3 is correct that explains statement 1 हमरो 1918 ପରେ कोन पे एटा डिक्लाइन करथिला रिप्रेशन गवर्नमेंट रिप्रेस करथिला लीडर माने सब अरेस्ट हेथिले आउ मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड डिक्लेरेशन हेथिला ठीक अछि व्हिच पैसिफाइड मॉडरेट जो मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड डिक्लेरेशन हेथिला मॉडरेट माने पैसिफाई कर देथिला तो लीडर माने ऑटोमेटिक डिसएसोसिएट हो जाइथिले मूवमेंट संगे 27 आंसर टा देखबा Home Rule League Association was gradually ceased after 1918. By 1919, it had completely obliterated. ठीक है स्टेटमेंट 2 is incorrect. बाल गंगाधर 1908 रे राइटिंग allegedly seditious article on केसरी आ गोटे कौन था तिलंकर जो न्यूज़ पेपरटा केसरी आ गोटे मराठा केसरीटा थिला तांकर मराठी लैंग्वेज ना को मराठी लैंग्वेज मराठा थिला इंग्लिश लैंग्वेज रे एटा मन रखियो एटी 1908 रे डिपोर्टेड हेतले सेडिशन बाय मंडले को however this event occurred much before home rule league movement and therefore cannot be reason for the decline of 1918 एटा हेतला तिलक decision to go to England at the end of 1918 to pursue a liable case he had filed against Valentina Chiral made the movement law suit fight करे जाइथिले गोटे 1988 हैला the moderates who joined the movement after Annie Besant's arrest were pacified by Montague reform हैला The announcement of the Montagu-Chelmsford reform further divided the nationalist rank. Thus, the difference of opinion clearly seen between extremist and moderate. Moderate मानक पैसिफाई कर देइथिले तो एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट मानक भीतर गोटे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट हेतिला स्टार्ट थर्ड स्टेटमेंट ठीक है छेटा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट लीड टू डिक्लाइन ऑफ होम रूल लीग स्वदेशी मूवमेंट 1905 कौन पे हितला एटा कौन पाई हितला स्वदेशी मूवमेंट कौन पे हितला बेंगल पार्टीशन 1905 सेतबेल किए थिले वाइसरॉय कर्जन लॉर्ड कर्जन
इवेंट सब मन रखियो को टाइम रे की थिले कोन हेतला इवेंट मन रखियो पड़े तुमको तो एटा कोन देछि सो दिस इट वाज मार्क्ड बाय द मास मोबिलाइजेशन ऑफ थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंड समितिज ठीक अछि इट वाज मार्क्ड बाय द मास मोबिलाइजेशन थ्रू लेबर स्ट्राइक ठीक अछि इट advocated a constructive program for the self help and आत्मशक्ति ठीक अच्छे आत्मशक्ति उपर से मैंने फोकस करते इन द स्पीयर ऑफ एजुकेशन नेशनल स्कूल्स वर एस्टाब्लिश्ड एटा भी ठीक अच्छे है 1 2 3 4 आउ कौन कहला बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स यूजेस ऑफ इंडिजिनियस प्रोडक्ट एजुकेशन कौन होता बेंगल नेशनल कॉलेज नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन बेंगल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन होता आउ इंडिजिनियस इंडस्ट्री होता पीसी रॉय गोटे एस्टाब्लिश करते बेंगल केमिकल स्वदेशी स्टोर स्वदेश बांध आउ गोटे होता समिति जो देती स्वदेश बांधव समिति से एस्टाब्लिश किए करते 1905 स्वदेशी मूवमेंट टाइम रे स्वदेश बांधव समिति गोटे होता से किए करते मन रखियो अश्विनी कुमार दत्त देखिए एटा बैकग्राउंड होइतला पार्टीशन ऑफ बेंगल हला लॉर्ड कर्जन एम थिला इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस नेशनल अवेकनिंग कॉज थिला गला ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो करथिले ग्रोइंग इंडियन नेशनल रिजिम आफ्टर आईएनसी सेशन 1890 परे हेतिला इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय ब्रिटिश इंडस्ट्रीज ये सब कॉज थिला मेथड कौन थिला बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड प्रमोशन ऑफ स्वदेशी खदी हैंडलूम bonfires of foreign cloths boycott of government schools college and court important leader बाल गंगाधर विपिन चंद्र पाल लाला लाजपत और अरविंद घोष अच्छी which of the following was or were the primary reason for the Surat split 1907 नहीं थिला कौन रीजन थिला को सूरत स्प्लिट कौन पे हितला मॉडरेट कौन पे हितला तांको भितरे ये हितला बट कौन पे हितला को डिसएग्रीमेंट होता कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्शन पे होता एक्सट्रीमिस्ट माने चाहिए लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट हूँ मॉडरेट माने चाहिए रासबिहारी घोष हूँ तो तांको भितर सेटा होता डिसएग्रीमेंट होता तिलक हाँ दि जन थे तो से कौन होता ना पढ़ी दूसरी अच्छा यहाँ मुझे पचार रिजन पचार आम यहाँ आग आंसर द डोमिनेशन ऑफ लीडर बिलोंगिंग टू सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी विद इन द कांग्रेस यहाँ नुहे आमर केबे यहाँ ये आइडियोलॉजीटा था 1920s या 30s रे जिते आसले आम जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस तो सूरत स्प्लिट 1907 होता द ऑपोजिशन बाय द मॉडरेट लीडर द इलेक्शन ऑफ रासबिहारी घोष एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ ठीक अच्छे ए सॉरी एटा भूल अच्छी एटा भूल देछि हाँ द ऑपोजिशन बाय द मॉडरेट लीडर कार इलेक्शन को से माने अपोज करथिले तिलक आ किए लाला लाजपत राय है या रासबिहारी घोष को सपोर्ट करथिले एटी स्टेटमेंट उल्टा दे दीछि तो एटा भूल हम the opposition by moderate leader within the Congress to extremist proposal to take Swadeshi movement outside Bengal एटा ठीक अच्छी आंसर कौन ओनली 3D
এইটা ହେଲା सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी विदिन द कांग्रेस एटा हमर जेतेबेले जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस आसथिले से केबे आसथिले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट केबे हितला 1920 सूरत स्प्लिट केबे हितला 1907 तो यहीटा हूँ 1920 1930 टाइम रे ये जो द डोमिनेशन ऑफ लीडर बिलोंगिंग टू सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट विदिन द कांग्रेस सोशलिस्ट कम्युनिस्ट फॉलो करते जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस सोशलिस्ट थिले जवाहरलाल नेहरू आमर कम्युनिस्ट थिले सुभाष चंद्र बोस एंड बोथ आइडियोलॉजी समहाउ सिमिलर ही ठीक है। यहाँ भूल हम यहाँ आमर क्वेश्चन उल्टा दे देछि अपोज कर सपोर्ट करते राजबिहारी घोष को यहाँ है मॉडरेट लीडर विदिन द कांग्रेस प्रपोजल टू से जो आम स्वदेशी मूवमेंट को आउटसाइड ना चाहूले मॉडरेट माने चाहूले विदिन बेंगल भितर रखापी हाँ लिमिटेड ये रखापी तो यहाँ हम डी हम आंसर है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट इनकरेक्ट ए लेफ्ट विंग एमर्ज इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द 1920-30s ideas of Marx socialist thinker inspired by many groups to come into the existence of socialist and communism. In the rise of left wing within the Congress represented by Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose. These young nationalists were inspired by the Soviet revolution. They began advocating radical solutions for economic, political, social ills of the country. तो कहीं ना तुम देखिपार इंडिया जो फास्ट प्लानिंग होता सोशलिस्ट ही था स्टार्टिंग 5 ईयर प्लानिंगटा सोशलिस्ट था तापर स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एक्सट्रीमिस्ट वांटेड क्या चाहूले लाला लाजपत भाई तिलक एक्सट्रीमिस्ट वांटेड 19th सेशन टू बी हेल्ड इन नागपुर बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत आर द प्रेसिडेंट They also wanted to reiterate of the Swadeshi boycott national education resolution. The moderate wanted the session to be held at Surat. कौन पे चाहूले सूरत रे करिया तार भी रीजन अच्छी in order to exclude Tilak from the presidency. तो सेठिकार जे रेसिडेंट थे से प्रेसिडेंट माने चेयर करि पारि प्रिजाइड करि पारिबेनी हला तो तिलक बिलोंग करते सूरत रू in order to exclude Tilak from the presidency since a leader from the host province could not be session president. Hello. Instead they wanted Raspberry Ghosh. आउ जन अच्छे Raspberry Bose. Difference मन रखियो हला. The president sought to drop the resolution on Swadeshi boycott national education. Extremists opposed the election of Raspberry Ghosh as president. Both side adopted rigid position ultimately leading to split. 1907 सूरत स्प्लिट होता पुणी रियूनियन केबे होते केबे होते 1916 लखनऊ सेशन लखनऊ सेशन स्टेटमेंट 2-3 करेक्ट अच्छी एक्सट्रीमिस्ट चाहूले बॉयकट और स्वदेशी को मूवमेंट आउटसाइड ऑफ बेंगल नापी बट मॉडरेट्स मैंने चाहून तो भर ये भी गोटे स्प्लिट हबार गोटे रिजन था Consider the following statements. Statement 1 देछि The Indian national leader expressed dissatisfaction with the Montagu Change Vote, also known as August Declaration 1917. Statement 2 देछि The Montagu statement vested the British government with the sole authority to determine the peace and extent of India's constitutional advancement. British government है the sole authority. एग्जाम रे भी एमती क्वेश्चन आसले ना अंडरलाइन करिवो एमती गोल बोले जो जो पॉइंट करा तो हाँ वार्ड करा तो लगे एमती इंपोर्टाट करा
एमती गोल बोल कहीं तुम क्वेश्चन फोकस रही तुम से टाइम फैक्ट स्टेटमेंट देला द मॉन्टेग्यू स्टेटमेंट मेड नो प्रोविजन फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज इन इलेक्शन लेजिस्लेटिव बॉडीज कौन होगा आंसर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड डिक्लेरेशन 1917 ठीक अच्छे मॉन्टेग्यू किए थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट formally declared British policies aimed at increasing Indian participation in every branch of administration ठीक अच्छे and gradual development of self-governing institution. Ultimate objective था responsible government in India as an integral part of British Empire. Despite this apparent concession, Indian political leaders expressed dissatisfaction. है statement वन ठीक अच्छे declaration failed to meet their concrete political expectation. Statement 2 कौन देछि although the declaration spoke of increasing Indian participation से कौन कहते इंडियन पार्टिसिपेशन एवरी ब्रांच एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया कही ग्रेजुअल डेवलपमेंट सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन भी डेवलप करिया कहते इट मेड इट क्लियर दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एलोन वुड डिटरमाइन द नेचर एंड पीस टाइमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट एलोन है डिटरमाइन करियो नेचर पीस एंड टाइमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट स्टेटमेंट 2 तमें ठीक अच्छी सोल अथॉरिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट जे डिसाइड करिवो केमिति कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट हबो Indian leaders strongly represented this as unilateral approach, as it implied that the British would judge what was suitable for Indians. चला ये यूनिलेटरल अप्रोच थिला ब्रिटिश मानकर तो इंडियन माने अपोज करथिले विदाउट इंडियन कंसेंट इंडियन बिना इंडियन कंसेंट करे हिसाब न नै कि से माने डिसाइड करथिले तो ए दीटा थिला बेसिक. This was one of the two principal objections raised by the nationalist. आउ भी थिला other objection कौन थिला specific time frame was no specific time frame was provided for the attainment of responsible government, making the promise vague and uncertain. Statement 3 भी correct है. The Montagu statement made no provision को भी provision नथिला हला for universal adult franchise in election to legislative bodies, which was inconsistent with nationalist demand. However, this omission was not among the principal objections raised by the against the declaration for dissatisfaction lay in the absence of. हमारा केबे मिली थिला हमर कहलो जो वोटिंग राइट्स केबे मिलला को एक्ट हिसाब रे लिमिटेड फ्रांचाइज मिली थिला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड थिला हमारा प्रॉपर्टी एजुकेशन तारी बेसिस रे लिमिटेड फ्रांचाइज मिली थिला तो एटा आंसर कौन हबो एटा 1935 तुम कहूछ ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज नेहरू रिपोर्ट रे डिमांड करथिल ना को वोटिंग राइट्स पे फंडामेंटल राइट तापर एजुकेशन ये 1935 रे असला एडल्ट फ्रांचाइज बट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रे लिमिटेड फ्रांचाइज दिया इतला ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी एजुकेशन सर्विसेज दिया इतला समस्त दिया नतला इटा हबो both statement 2 and 3 are correct हला but only one of them explains statement 1. ठीक अछि बुझला त एटा नेशनल लीडर कौन पे डिसैटिस्फैक्शन एक्सप्रेस करथिले मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन रे क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट सोल अथॉरिटी जो डिटरमाइन करूला पीस एक्सचेंज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट रे बट 2 and 3 आर करेक्ट.
दुटा स्टेटमेंट ठीक अच्छे कौटा आंसर एटा हम बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1 तीनटा स्टेटमेंट ठीक अच्छे with reference to British India the Curzon Kitchener controversy एटा कौन पे हितला 31 issue of control of military affairs in India ये किए थे ये थे मिलिटरी हेड कर्जन थे वाइस रॉय तो कर्जन कौन चाहूले कर्जन वांटेड टू रिटेन सर्टन सिविल कंट्रोल ओवर मिलिटरी फंक्शन सिविल कंट्रोल मिलिटरी फंक्शन ओवर रखा चाहूले तो यहीटा से चाहू नथिले ये मिलिटरी हेड थिले तो यहीटा होता इश्यूज ऑफ कंट्रोल ऑफ मिलिटरी अफेयर्स इन इंडिया आ किसी ना यहाँ 31 टा देखिए वाइस रॉय केवेटू केवेटे थे कर्जन देख 1899 ରୁ 1905 ताको टाइम रे कौन कौन सब इवेंट होता बेंगल पार्टीशन लॉर्ड किचनर किए थे कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कर्जन वांटेड टू रिटेन सिविल कंट्रोल ओवर सर्टन मिलिटरी फंक्शंस एंड मेंटेन द वाइसरॉय इन्फ्लुएंस इन आर्मी मैटर while the commander in chief sought full control over the organization deployment and administration of the Indian army एटा थिला नॉर्मल तांकर येटा कंट्रोवर्सीटा examine these two statements carefully and select the correct answers using the code given below statement 1 the British legal scholar relied on Indian Pandit and Maulavis for understanding canons of authoritative texts ठीक अच्छे है British codified the Hindu laws in 1783 and the Muslim laws in 1785 जोटी डेट टाइम डाटा फैक्ट्स दे देला सब वेरीफाई करिवो एटा भूल अछि एटा हमर केबे फर्स्ट लॉ कमिशन केबे हितला 1833 to unify and codify Indian laws 1833 स्टेटमेंट 1 ठीक अछि The British did rely on Indian Pandits and Maulavis for understanding the canons of authoritative texts of Hindus and Muslims in India. They appointed Pandits and Maulavis as court advisor and translator for ancient text. Statement 2 is incorrect. The British did not codify Hindu and Muslim law 1783 and 1785 respectively. The actual codification of Hindu and Muslim law took place much later in 19th century. 1833 रे आसला लॉ कमिशन टू यूनिफाई एंड कोडिफाई इंडियन लॉज यही सब एग्जाम रे यही सब जिनस तुम टे चेक करूँ ना ट्रिक कर दिखते यही सब जिन फैक्ट डाटा गुरा भूल भाल टिके भूल भाल पकईकि ट्रिक करदे क्वेश्चन टाइम तुम भूल थो तुम भाव डाटा फैक्ट देती ठीक थी मारदे डेटा भूल अच्छे हाँ डेट तुम टिके मन रखा पड़े इवेंट करा तुम मन रखा पड़ो देख लॉ कमिशन आइला 1833 है जब यहाँ तुम मन थो यहाँ तुम एलिमिनेट कर इटा 32 स्टेटमेंट 1 is true statement 2 is false during the revolt of 1857
A battle took place near Lucknow in which Maulavi Ahmadullah Shah, a prominent leader from Faizabad, led a large force of rebels against the British. In this engagement, the British troops under Sir Henry Lawrence were defeated, forcing them to retreat fortified position. This battle demonstrated strong local resistance and significantly disrupted British plan to consolidate control of Awadh. एटा पचार को बैटल को नहीं होता को बैटल एटा बैटल ऑफ चिन्हाट बाकी बैटल एटा के होता बैटल ऑफ सरगराई के होता 1897 क्या भितर अफगान और ब्रिटिश अफगान ट्राइब्स एंड ब्रिटिश बैटल ऑफ चिन्हाट होता आमर नियर लखनऊ पाखे द कैपिटल ऑफ अवध Maulavi Ahmadullah Shah, a prominent leader from the Faizabad, mobilized large force of local rebels and confronted the British troops under Sir Henry Lawrence. 1857 रो को जगारू किए लीड करी थी लीडर किए थिले और सेकंड हैला से लीड से ये रिवोल्ट को सप्रेस किए करथिले ब्रिटिश रो चीफ सेटा इंपोर्टेंट सेटा देखिया एटा बैटल ऑफ सरगराही होता आमर 1897 नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रे होता ब्रिटिश इंडियन आर्मी अगेंस्ट अफगान ट्राइब्समैन आउ थर्ड है बैटल ऑफ नरानुल आमर होता हरियाणा रे होता ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857 तो इम्पोर्टेंट नुहे पूरा यहाँ बैटल ऑफ ट्रिमुघाट पंजाब रीजन होता ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857 एलोंग द रवि रिवर एटीन 57 मेन है तुम कॉज कॉन्सिक्वेंसेस लीडर किए थिले से ये को सप्रेस किए करथिले सेतिक जिंस जानियर अछि Who is one of the following was primarily associated with the Dadni system? Dadni system टा कौन थिला एटा एटा गोटे थिला टेक्सटाइल प्रोडक्शन एटा कौन करले ना ब्रिटिश माने इनिशियली से माने एडवांस रे दउथिले हमर फार्मर मानन को प्रोडक्शन पई दउथिले तो प्री डिटरमाइन प्राइस से माने प्रोक्योर करथिले मर्चेंट एंड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी गेव कैश एडवांस टू वेवर एंड आर्टिसंस फॉर कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन टू रिसीव फिनिश गुड एट प्री डिटरमाइन प्राइस हैला एटा को दादनी सिस्टम कहंती आ किछ नै आधरे Business management English East India Company in Bengal 18th century the company used to engage local merchant and middlemen man को engage करथिला to procure goods especially textile from the market on its behalf they were called at the Dadni merchant because they received advance from the company for delivering goods on the stipulated terms हैला this merchant gave advance and raw materials ताको दादन कहउथिले to the artisan and bought finished fruit from the artisan supply Britishers माने बेसिकली हैला से माने प्री डिटरमाइन प्राइस रे से माने एग्रीमेंट करूथिले ताको कैपिटल दउथिले आर्टिसन मानको टू पछरे से प्रोक्योर करथिले टेक्सटाइल प्रोडक्शन रे रिलेटेड एटा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेजिंग resentment against British East India Company's rule in India what was the immediate cause of the Vellore mutiny 1806 वेलोटा कोठी तमिलनाडु
इवेंट सांगे तुम एरिया भी मन रखुव कौटा साउथ रे कौटा नॉर्थ रे कौटा ईस्ट वेस्ट हो मन रखुव तार आंसर कौन हम वेलोर म्यूटिनी कॉज कौन थिला फोर्सिंग इंडियन सेपर्ट टू फाइट फॉर द ब्रिटिश कॉज इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज दिस बैंडिंग ऑफ द आर्मी regiment by the East India Company, introduction of new military uniform regulation that violated the religious practices of both Hindu and Muslim sepoys, introduction of grease catteries in India suspected to be coated with animal fat. एटा केबे हेतला एटा 1857 1857 वार एटा इमीडिएट कॉज ला एटा तो एटा हबनी वेलोर म्यूटिन देछि तो एटा आंसर हबनी आंसर हो एटा हला introduction of new military uniform regulation that violated the religious practice of both Hindu and Muslim sepoys. Velour Mutiny 1806 earliest armed revolt in Indian sepoys against British East India Company. The mutiny erupted when the British introduced कौन इंट्रोड्यूस करते यूनिफॉर्म रेगुलेशन दैट वायोलेटेड रिलीजियस प्रैक्टिसेस है बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सेपोइज फॉर एग्जांपल दे वेयर फॉरबिडन फ्रॉम वेयरिंग रिलीजियस मार्क्स लाइक सिख मैंने कौन पिंधले टर्बान ऑन देयर फोरहेड एंड वेयर रिक्वायर्ड टू सेव देयर बियर्ड मुस्लिम मानों को सिख मानों को बीएड सेव करा कहते द सेपोय सीज द वेलोर फोर्ट प्रेजेंट इन तमिलनाडु एंड किल्ड मेनी ब्रिटिश ऑफिसर टू द ब्रिटिश हावर क्रॉस द रिवर किलिंग और एग्जीक्यूटिंग हंड्रेड्स ऑफ सेपोइज वेलोर म्यूटिनी 1806 with reference to the colonial rule in India during early 1770s consider following statement. There was a famine in Bengal province during this period which claimed nearly 1/3 of the population of the provinces. Statement 2 कौन अछि the famine during this period was preceded by successive crop failure due to adverse climatic condition. ठीक अछि. Statement 3 the East India Company imposed high cash revenue demand on cultivator irrespective of harvest condition. एटा भी ठीक अच्छी स्टेटमेंट 1 टा ठीक अछि ना नहीं को ठीक अच्छी 1770s रे फेमाइन नेथिला तो बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1 बेंगल फेमाइन 1770-72 रे हितला company जो ईस्ट इंडिया कंपनी had recently acquired revenue collecting right on most prosperous region of India बेंगल बिहार ओडिशा को बैटल पर हेटा को बैटल पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट पाइथिला बैटल ऑफ बक्सर 17 केबे हितला बैटल ऑफ प्लासी केबे हितला 1757 बैटल ऑफ बक्सर हितला 1764 ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट डिवानी राइट्स ओवर बेंगल बिहार ओडिशा राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू ठीक अच्छे तो आमर फेमाइनटा हितला केबे 1770-72 रे जस्ट ता परे परे हितला तो स्टेटमेंट 2-3 कौन अच्छी बेंगल फेमाइन वाज प्रिसीडेड बाय 2 consecutive years of poor harvest which sharply reduced the food availability in Bengal एटा ठीक अच्छी एग्रीकल्चर आउटपुट डिक्लाइन हितला फेमाइन हैला आमर आउटपुट डिक्लाइन कला तापरे वीकनिंग कला रूरल लाइवलीहुड लिविंग कल्टिवेटेड विथ लिटिल बफर अगेंस्ट द स्कैरसिटी तो सेम टाइम रे ब्रिटिश माने कौन कले ना कैश बेस्ड रेवेन्यू टारगेट कले से माने हैला तो डिमांड रिमेन्ड अनचेंज इवन व्हेन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कोलैप्स्ड एग्रीकल्चर कोलैप्स जो आमर प्रोडक्शन कोलैप्स करिला बट से माने कैश बेस्ड रेवेन्यू डिमांड करथिले
तो ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫେମାଇନ୍ ଟାଇମ୍ର ଇଏ ଥିଲା। ये जो स्टेटमेंट गुरा देइछि तीनटा रिलेटेड स्टेटमेंट 2 3 करेक्ट अछि बोथ ऑफ देम एक्सपीरियंस स्टेटमेंट 1 आउडला इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन ए रूरल सेटिंग केबे इतला एटा embrace an agrarian program including demand for reduction of land tax and rent by 50%, ensuring minimum wage for agriculture worker, recognition of peasant union etc. एटा केबे हितला फर्स्ट टाइम हमरो रूरल सेटिंग रे केबे हितला गो केबे हितला फेसपुर 1936 फेसपुरटा कोठी महाराष्ट्र एटा थिला हमरो 50th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एटा की चेयर करथिले जवाहरलाल नेहरू त्रिपुरी सेशन कौन इम्पोर्टाट कौन इम्पोर्टाट एट स्टार्टिंग रू कही कौन इम्पोर्टाट सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड होते आमर प्रेसिडेंट आईएनसी रे प्रेसिडेंट बट लैटर रिजाइन कर देते देखिए आंसरटा 50th सेशन ऑफ आईएनसी वाज हेल्ड इन फेसपुर महाराष्ट्र presided by Jawaharlal Nehru 1936 first to be held in rural setting प्रथम थर होइतला रूरल एरिया रे agrarian program embrace an agrarian program of action in line with Kisan manifesto all India Kisan Sabha first time Kisan manifesto गोटे आसला हैला agrarian program of Indian National Congress included demand for reduction of land tax and rent by 50%, ensuring minimum wage for agricultural worker, recognition of peasant union and complete abolition of feudal levies हैला एटा मन रखियो रिडक्शन ऑफ लैंड टैक्स और रेंट 50% करथिले रिड्यूस करिया पे करथिले मिनिमम वेज एग्रीकल्चर वर्कर मान पे करथिले आ पीजेंट यूनियन को रिकॉग्नाइजेशन पे करथिले Consider the following statement. Assertion hella A. Lord Linlithgow describes the August movement of 1942 as the most serious rebellion since Sepoy Mutiny. Reason hella there was a massive upsurge of the peasantry in certain areas. कौन हम अगस्ट मूवमेंट कौन काउ कहते को मूवमेंट को अगस्ट मूवमेंट कहते क्विट इंडिया मूवमेंट केबे हितला अगस्ट 8 1942 हला हला क्विट इंडिया मूवमेंट ठीक अच्छे हला लॉर्ड लिनलिथगो डिस्क्राइब अगस्ट मूवमेंट एज 19 सीरियस रेबेलियन सिंस सेपोय म्यूटिनी देयर वाज अ मैसिव अपसर्ज ऑफ पीजेंट इन सर्टेन एरियाज ठीक अच्छे हला से टाइम रे वाइस रॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो 1936 टू 1944 है डिस्क्राइब्स द अगस्ट मूवमेंट 1942 वाज द मोस्ट सीरियस रिवोल्ट आफ्टर द सेपोय म्यूटिनी ऑफ 1857 द मूवमेंट वाज आल्सो नोन एज क्विट इंडिया मूवमेंट सॉरी एटा ला 9th अगस्त 1942 8th अगस्त 9th अगस्त है द रीजन व्हाई लॉर्ड लिनलिथगो कंसीडर द मूवमेंट एज जो हमरो को मोस्ट सीरियस रेबेलियन कहीं कहते देयर वाज अ मैसिव अपसर्ज ऑफ peasantry in certain areas especially Bihar, Eastern UP, Medinapur district, Bengal and part of Maharashtra. The peasants joined the movement in large numbers and participated in various forms resistance such as strike करथिले boycott करथिले sabotage करथिले attacks on
पुलिस स्टेशन गवर्नमेंट ऑफिसेस टेलीग्राफ लाइन काटी देइथिले रेल ट्रैक को काटी देइथिले गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को निया लगे देइथिले पीजेंट माने बहुत एक्टिव थिले से ये Who among the following moved quit India resolution Bombay session Congress 8 August रे हमर क्विट इंडिया मूवमेंट रिजोल्यूशन 8 अगस्त होइतला मूवमेंट स्टार्ट होइतला 9 अगस्त हैला 8 अगस्त रे मूवमेंट रिजोल्यूशन टा मूव होइतला एटा के मूव करथले जवाहरलाल नेहरू क्विट इंडिया जो स्लोगान टा थिला किए कॉइन करथले कहि परबे कि यूसुफ मेहर अली ए टाइम रे प्रेसिडेंट किए थिले आइएनस रे प्रेसिडेंट किए थिले ए मन रखियो 1940 रु 1946 मौलाना अबुल कलाम आजाद एटा मन 1940 रु 1946 थिले प्रेसिडेंट किंतु रिजोल्यूशन मूव करले जवाहरलाल नेहरू 8 अगस्त से रिजोल्यूशन मूव होइतला 9 अगस्त से मूवमेंट स्टार्ट होइतला देखि तो एटा आंसर कोन छी July 1942 Congress Working Committee adopted Quit India Movement resolution which was to be ratified by the Bombay meeting in August. The Quit India resolution was moved in Bombay session of Congress in the year 1900 Jawaharlal Nehru. It asla a resolution August 8 was moved by Pandit Nehru and seconded by Sardar Vallabhbhai Patel. Quit India movement officially began in August 8 1942. August 8 Mahatma Gandhi addressed the people Gwalior Tank Maidan now as August Kranti Maidan Bombay were delivered famous do or die speech. The Quit India was coined by Yusuf Meher Ali, socialist leader who was then mayor of Bombay. In the context of Indian freedom struggle, Shanti Ghosh and Bina Das, best known for involvement in which of the following activities? मॉडर्न इंडिया रे पर्सनालिटीज करा बहुत इंपोर्टेंट तमरो हमर 1905 रे को पर्सनालिटी ले 1942 रे के पर्सनालिटीज थिले हमर 1857 रे के पर्सनालिटीज थिले सब हमर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रे के थिले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के पर्सनालिटीज थिले सेरा सब मन रखियो पड़ियो हला एटा को टाइम रे हितला एक्टिविटीज कोन थिला शांति घोष बीणा दास को ये रे इन्वॉल्व थिले B. Organizing anti-चौकीदारी tax campaign in Bihar during civil disobedience movement. ठीक है 1930. Sorry, भूल अछि एटा. एटा थिला 1930 रे तो हितला एटा बट एटा आंसर नै एटा 1930 रे हितला आंसर है पार्टिसिपेटिंग इन द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज लाइक अटैक्स ऑन ब्रिटिश ऑफिसर्स इन बंगाल एटा आंसर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज माने कि रिवोल्यूशनरी थिले हला बीणा दास आवेला Shanti Ghosh. The revolutionary phase of Indian national movement, especially 1920s and 30s, witnessed notable participation of young men and women in Bengal revolutionary activities acquired a distinct character marked by group action, symbolic attack on colonial authority, and active involvement of women. ठीक है
तो बीणा दास आउ शांति घोष रिवोल्यूशनरी थे, ठीक अच्छे। शांति घोष वाज ए school student from Komila who along with Sunit Chaudhary assassinated the British district magistrate as an act of revolutionary resistance. Her action was part of broader revolutionary current in Bengal that emphasized direct attack on symbols of colonial authority. Veena Das भी थे become widely known for her attempt on life of the governor of Bengal, ठीक अच्छे। एटा है आमर सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट टाइम रे आंटी चौकीदारी टेके टैक्स कैंपेन टा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट दिल्ली मैनिफेस्टो 1929 रिलेटेड टू ता कौन पे हितला दिल्ली मैनिफेस्टो से किए थे आमर वाइसरॉय laying down the conditions for India's participation in the first roundtable conference 1929 एटा हितला। कौन कौन थिला तार ये देखिया प्री कंडीशंस ला इंडिया पार्टिसिपेशन किसे प्री कंडीशन ला कौन थिला immediate acceptance of dominant status are the basic principle and the round table conference was to function not to decide whether or when dominant status would be granted but to frame constitution for its implementation. हला इंडिया डिमांड करथला immediate acceptance of dominant status कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एथिपाई नुए कि से डिसाइड करिवो डोमिनेंट स्टेटस दिया हुए दिया हबनी इमीडिएटली डोमिनेंट स्टेटस दिया जाओ हमको मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन करबे इंडियन नेशनल कांग्रेस रो जनरल एमनेस्टी फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर जनरल एमनेस्टी माने को एमनेस्टी माने को जो पॉलिटिकल प्रिजनर थिले ता छाड़ी देव से कहते जो फॉरगिव कर देवाई जनरल एमनेस्टी ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर एंड द अडॉप्शन ऑफ पॉलिसी ऑफ कॉन्सिलिएशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलोइंग दिस महात्मा गांधी मोतीलाल नेहरू अदर लीडर्स मेट वाइसरॉय लॉर्ड इरविन in December 1929 to seek assurance that conference would draft a constitutional scheme for dominant status. Lord Irwin reject करथिले तो माने पार्टिसिपेट करनथले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे आ गोटे बोलन से को जणे पर्सनालिटी एमित थे जे तीनटा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करथिले आंबेडकर राइट यति तो तापर आमर सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट होता आमर इरविन रिजेक्ट कले रिजेक्ट कला परे गांधी आमर सिविल डिसोबिडियंस स्टार्ट करथिले एति तापर करंट अफेयर रहला हो।